Hello dear students, today we'll discuss about the problems based on relation. In the previous lecture we have discussed about the various concepts of what the type of relations we have, and they're divided into 6 different categories, and in these 6 different categories we are going to prove some questions. We'll take some questions from the NCERT book first of all, and I'll let you know how to basically write down the correct solution in a systematic manner, because you are going to appear in the board examination this year, especially class 12 children, and you will get marks only if you will solve the questions according to CBSE expectations. So it is very important for you to know on which step you will get 1 mark and how later on you can score the entire marks given to you as per every question. Fine children, so before I go ahead solving the questions based on the topic relation of your textbook unit number 1, let us quickly recall the types of relation and then we will move ahead toward the questions. Okay, so dear students, we have 6 categories or 6 types in which the relations are being divided. हमारे पास 6 अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें रिलेशन को हमने डिफाइन करा है दोस्तों. फर्स्ट इज द एम्प्टी रिलेशन. एज यू नो दैट व्हेन एवर वी डिफाइन सम रिलेशन ऑन एनी सेट and we are not getting any element with respect to that particular defined relation, then such a relation is called an empty relation. The second is universal relation, in which all the elements of a set can be associated with each other. Third is reflexive. When with respect to certain relation an element is connected to itself is called reflexive. In symmetric, when I take elements A and B and we say A is related to B, and if we get in the same manner B is also related to A, then the relation is called symmetric. The fifth one is transitive. Here we take 3 elements A, B and C. Okay, so 3 elements में हम A related to B हमें पता होता है, B related to C ये भी हमें पता होता है, and then we try to prove that A is also related to C. Such kind of relation is called transitive relation. And the most important, the last one, equivalence relation. Children, you know that when a relation is reflexive, symmetric and transitive, then such a relation is called an equivalence relation. So when you are asked to prove that the given relation is equivalence, basically you have to prove all the 3 properties: reflexivity, symmetricity and transitivity. When a relation will satisfy all the 3 properties, then you can surely declare that the given relation is an equivalence relation. Fine. So these are the 6 categories under which we are going to discuss the questions. Okay, you have to note down all the questions systematically in your copy. You should prefer to use black and blue ball pens. You should have clear handwriting so that whenever you will revise the topic, the copy prepared by you, the notes prepared by you will be very much useful to you. And no doubt that these videos will be available for you all the time, so you can watch this video every time whenever you feel that you want to revise the topic. Okay, let us move ahead towards the question number 1. So dear students, here we have the first question, that R is defined on set A which contains elements 1, 2, 3 ... till 14 such that R is x comma y, the ordered pair, such that 3x minus y is equal to 0. So this is the defined set. According to this condition, basically we have to find out how the elements of R we have, number 1, and we also have to check whether it follows the properties reflexivity, symmetricity or transitivity. Dear student, as it is written that 3x minus y is equal to 0,
this implies that 3x is equal to y. Okay, every element y you have to select in such a way it is 3 times of the element x. So I can say this r. Now if I take select x as a 1, 3 times of 1 is 3. If I select x as a 2, 6. See, we have the limitations up to 14. If I select 3, I have 9. If I select 4, I have 12. Can I select number 5? Because if you have x as a 5, then 5 3s that will become 15, and 5 comma 15 if you want to go with, but we have the limitations up to 14. So dear students, this is the set of एलिमेंट्स कनेक्टेड विथ आर. अब आप मुझे बताइए कि ये जो रिलेशन आर बना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. अब जहाँ तक बात है रिफ्लेक्सिविटी की, कोई भी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड नहीं है. 1 कभी खुद का 3 टाइम्स नहीं हो सकता, न 2 हो सकता है न 3 हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्री भी पॉसिबल नहीं है कि अगर 3 1 का 3 टाइम्स है तो क्या 1 भी 3 का 3 टाइम्स है, नहीं. तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है. और अगर ये ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का रिलेशन आप देखेंगे 9 से, तो क्या 1 और 9 कनेक्टेड है, नहीं. 9 कभी भी 1 का 3 टाइम्स नहीं हो सकता. तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है हम कहेंगे कि इज़ इट रिफ्लेक्सिव, तो नो. इज़ इट सिमेट्रिक, नो. इज़ इट ट्रांजिटिव, then also no. So this particular set of values with respect to this relation is neither symmetric nor neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, let us see the next question in which we have to justify the relation with respect to again these three properties, but the definition will change. I'm taking all this question from the exercise 1.1 of your NCERT textbooks, and the questions which are very very important as far as board examinations are concerned. So let us see the next question. Children, in this question we have given this condition to check whether the relation capital R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. As you know that we have to take the elements from this set only, so I can construct the relation like if I take A as a 1, so B will be 2 because B is A plus 1. If I take A as a 2, B will be 3, A as a 3, B will be 4, A as a 4, B will be 5, A as a 5, B will be 6. Okay, now I cannot go ahead because if I select 6, I should have 6 plus 1, 7. So now children, is it reflexive? Can you say that there is a pair 1 1, 2 2, 3 3 anywhere? No. So since 1 comma 1, 2 comma 2 and 3 comma 3 does not belong to R, it is not reflexive. Symmetry, if 1 is related to 2, does 2 also related to 1? Definitely no. So it is not symmetric. Is it transitive? If 1 is related to 2 and 2 related to 3, do we have 1 related to 3? No, nowhere. So it is also not transitive. So such type of questions will be asked to you in 2 mark categories in the board examination, where you need to justify the various types of relation using suitable examples and in proper manner. Okay, let us move ahead towards the 4 mark category questions in which you have to systematically prove the given question. Okay, so here we go with.
Let us see this beautiful question that show that the relation capital R in the set A of all books in the library of a college given by R x comma y, where x and y are representing the books and both the books have same number of pages, is an equivalence relation. Okay, so to prove that it is an equivalence relation, how we should start in the board examination? You start for the first case, reflexivity. Let x belongs to A. Okay, then x comma x belongs to capital R as any one book has equal pages with itself. दुनिया में किसी भी बुक को अगर उसी से कंपेयर किया जाएगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अगर मैं एक ही बुक मैथ्स के लेके बैठा हूँ और उसी को मैं दोबारा देखूँगा तो डेफिनेटली सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, है ना। जैसे आपको अगर मैं 100 रुपीज़ नोट की एक ऐसा बंच दे दूँ, गड्डी दे दूँ और उसमें 100 नोट्स ही हैं, आपने एक बार गिना एक डायरेक्शन से तो 100 आए, फिर चेंज किया फिर से गिना फिर भी 100 आए, आप डायरेक्शन कितनी भी बदल लें करेंसी तो 100 ही रहेगी। ऐसा ही बुक का भी है ना। तो हर बुक अपने आप से तो रिलेटेड है ही क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है। ऐसे ही हम बाकी दो प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव करेंगे। नाउ सी द सिमेट्री। यू टेकन x and y, two elements from the set A, such that they are in pair belongs to R. When x comma y belongs to R, you can say x and y has equal number of pages. If x and y has equal number of pages, why not y and x? ठीक है, इसके पास भी इक्वल नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसका मतलब y comma x belongs to R. And now we have started with x comma y. You have reached to y comma x. This means R is symmetric. Students, in the same manner, if you take three books x, y and z, as far as transitivity is concerned, when you take x comma y comma z, three books, and you take x comma y belongs to R as well as y comma z belongs to R. Now these two will suggest you that x and y have equal number of pages and y and z has equal number of pages. Now x and y equal pages, say 100 100, y and z equal pages 100 100. Very obvious to say x and z will also have equal number of pages. So here you can justify that x comma z also belongs to R, and you can write that relation is transitive. Okay students, and at the end you have to write down one very important statement, and the statement is, since the relation is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation. This last statement with respect to every question where you are going to prove that it is an equivalence relation is very very important, because here you are justifying properly that a relation is equivalence only if these three conditions are well satisfied. Okay students, so every time whenever equivalence relation is being asked, you have to write down all the three types properly and to justify. Okay, let us see one more interesting question. Dear students, in this question R is defined on a set of triangles in a plane such that R will take only two triangles such that they are congruent. ओके, यहाँ पर T1 T2 दो ट्रायंगल तभी पेयर में आएंगे जब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और आपको ये शो दैट करने को कहा गया है कि ऐसा रिलेशन हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब आप अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक अगर प्रूव करना चाहें तो क्या, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जब आप बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ट्रायंगल वन कॉन्ग्रुएंट खुद के नहीं होगा तो वो कैसे पॉसिबल है? हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो है ना। तो T1 T1 बिलोंग्स टू R, ये तो बात तय है कि हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट है।
और अगर आप T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R लेके चलते हो तो आपने कहा T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, इसका मतलब यही हुआ कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट है T1 को। ठीक बात है ना। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है कि T1 T2 के जैसा ही है, इट क्वाइट ऑब्वियस कि T2 भी T1 जैसा होगा। इसका मतलब T2 कॉमा T1 भी बिलोंग्स टू R होगा। So to start with T1 comma T2, you are reaching up to T2 comma T1. So definitely it is symmetry. In the third case, if T1 is congruent to T2, you take, and T2 is congruent to T3, you take. That means T1 comma T2 and T2 comma T3. It is so obvious to say that if T1 T2 are congruent, T2 itself congruent to T3, all three are equal. So definitely T1 is also congruent to T3, and you say T1 comma T3 also belongs to capital R. So in the first, a triangle is congruent to itself, so T1 comma T1. If two triangles are congruent, then definitely their order can be changed, and if three triangles are congruent to each other, so no doubt that you can write down the transitivity. And at the end, what you will write? Since the relation is reflexive, symmetric and transitive, then definitely it is an equivalence relation. Okay, so these two questions I have discussed are quite easy, I guess, and very easy to justify. Now let us grab a question which was asked in a board examination, and many students at national level committed a mistake. What is that important question? And dear students, it will be also important for you for your board examination. So let us see the question. So dear children, this is the required question. R is defined on a set of natural numbers such that every two numbers, if you select as a natural but their sum is a even, and you have to show that R is an equivalence relation. Dear students, if we select any two numbers from natural number, is it true that we will always get their sum as a even? No. Suppose you select 1 and 2, their sum is 3. Here 1 is odd and 2 is even, but the sum is odd. So you have to understand one situation, that there will be two possibilities to get the sum even only if, number 1, both are odd. You add any two odd numbers, 5 और 3 आप ऐड करिए आपको 8 मिलेगा, 13 और 7 ऐड करिए 20 मिलेगा, है ना। तो बोथ आर ऑड एंड बोथ आर इवन, तभी आपका सम इवन आएगा। वही पेयर यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको जो लिखने का तरीका वैसा होना चाहिए। आपको केस 1, लेट ए एंड बी बोथ आर इवन, ठीक है, बोथ इवन करो। तो आप ए को 2m मान लीजिए और बी को 2n मान लीजिए। 2m का मतलब होता है 2 का मल्टीपल और 2n, है ना। अब आप बताइए, अगर मैं a की पेयर बनाऊंगा तो होगा क्या? मैं 2m + 2m ही ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 4m, और ये तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए a डेफिनेटली बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव। अगर मैं a और b दो एलिमेंट लेता हूँ और 2m + 2n करता हूँ, सो ये हमेशा इक्वल होगा 2n + 2m डेफिनेटली। सो a, b अगर आप रिलेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली b, a भी इक्वल होगा, तो ये रिलेशन यहाँ पर सिमेट्रिक भी है। अगर आपने थर्ड एलिमेंट ले लिया, वो भी 2 का मल्टीपल से 2k, अगर आपने देखा कि a और b का रिलेशन है ना, ये दोनों इवन है इसलिए सम भी इवन आ रहा है। फिर आप b और c का सम लोगे तो भी इवन आएगा। सो फॉर श्योर दैट अगर a और c भी ऐड करोगे तो 2m + 2k मिलके 2 कॉमन आ जाएगा, तो a और c भी रिलेशन में आ जाएंगे। इसका मतलब केस 1 में जब हमने दोनों को इवन लिया है तब भी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वो तीनों प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पर केस 2 भी डिफाइन करना होगा, और वो केस 2 क्या? केस 2 में आप दोनों को ऑड ले लोगे, तो आपको a की जो वैल्यू है
वो 2m+1 माननी पड़ेगी और b की वैल्यू 2n+1। ऑड नंबर ऐसे ही होते सक्सीडिंग टू इवन, है ना स्टूडेंट्स। अब आप बताइए, अगर मैं a, यहाँ पर लूँगा तो मुझे 2m+1 में 2m+1 ही ऐड करना होगा। आप खुद बताइए रिज़ल्ट क्या होगा, 4m+2। इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको 2m+1 मिलेगा, मतलब रिज़ल्ट इवन है। ठीक है, अगर आप a, b पेयर लेते हैं तो आपको 2m+1 में 2n+1 ऐड करना होगा। आप भी जानते हैं कि 2 कॉमन आकर m+n+2। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 1+1 2 हो गया। तो a+b अगर आप इसे रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 के साथ n+m आ जाएगा। इसका मतलब a, b अगर बिलोंग्स टू आर है तो b, a भी बिलोंग्स टू आर है। वैसे ही आप a, b से 3 अगर ऑड ले लेंगे तो c को आप 2k+1 सपोज ले लिया, तब भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि a और b मिलके इवन है, b और c मिलके इवन है। अगर आपने a और c भी ज्वाइन करा तब भी देखिए 2m और 2k मिलके 2 कॉमन m+k और 1+1 2, ओवरऑल 2 तो कॉमन आना ही है। इसका मतलब चाहे हम a और b दोनों इवन ले लें या ऑड ले लें, है ना, दोनों ही केसेस में जो रिलेशन है वो क्लियरली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टूडेंट्स ने गलतियाँ ये करी बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों, उन्होंने केसेस डिस्कस नहीं करें और ऐसे ही ए और बी नेचुरल नंबर लेके जस्टिफाई कर दिया, जबकि आपको स्पेशल स्ट्रक्चर लेके प्रूव करना था। यही आप लिखेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ जो आपको अपने हिसाब से समझ के अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन ये है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ R इज़ डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ पॉलीगॉन्स सच दैट P1 P2 आर पॉलीगॉन्स एंड दे हैव इक्वल साइड्स। अब आपको खुद ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक भी पॉलीगॉन लेंगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो खुद के तो इक्वल साइड्स वाला हो गई। इन दिस मैनर यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन पर जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में ही आते हैं या उससे छोटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में। आपको सिस्टमेटिकली चीज़ों को प्रूव करना है और जस्टिफाई करना है। जब आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपको सारे स्टेप मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। सो इसी तरह आप और नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।